हाय एवरीवन, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ वेरी फेमस पोएम कॉल्ड डैफोडिल्स बाय नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये जो पोएम है ना, इट्स बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ CHSE। नाउ लेट्स बिगिन। सो डैफोडिल शुरू करने से पहले, पोएम शुरू करने से पहले देख लो कि डैफोडिल्स होते कैसे हैं। बेल शेप्ड गोल्डन येलो फ्लावर्स, ओके, इस तरीके से होते हैं। और ये जो भाई साहब हैं, ये है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। नाउ I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. I here refers to the poet. Okay, so the poet was wandering aimlessly. Now, ठीक है, शुरू करने से पहले ना हम थोड़ा बात कर लेते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो वर्ड्सवर्थ जो है ना, वर्ड्सवर्थ, उनकी बहन डोरथी वर्ड्सवर्थ, और कभी कभार उनके साथ एक कंपेनियन और एक पोएट भी जाते थे, कॉलरिज। तो ये तीन क्या करते थे ना, दे यूज्ड टू वॉक, दे यूज्ड टू गो ऑन लॉन्ग वॉक्स। कहाँ पे? जो यूरोप में एल्प्स रीजन है वहां पे, कंट्री साइड ऑफ यूरोप, स्विस माउंटेन्स, वहीं पे बहुत ही ज्यादा उनका वॉकिंग चलता था, पोएट्स का। तो ऐसे ही एक वॉकिंग करते वक्त वर्ड्सवर्थ केम अक्रॉस अ फील्ड ऑफ डैफोडिल्स। अब डैफोडिल्स का आपने चेहरा देख लिया, येलो कलर, जैसे कि शाहरुख खान के मूवी में हमारा होता है कि सरसों का खेत, येलो वाइब्रेंट कलर immediately catches attention. Similarly, Wordsworth was wandering aimlessly across the countryside, okay, like a lonely cloud in the blue expanse of a sky. एक अकेला क्लाउड जैसे यहाँ वहां भटकता रहता है, सिमिलरली बिना डायरेक्शन के। सिमिलरली वर्ड्सवर्थ जो है वो बिना डायरेक्शन के ऐसे ही चलते चलते रहते थे, या फिर कंट्री साइड में ऐसे ही घूमते फिरते थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही केम अक्रॉस अ फील्ड which was yellow in color. Why? Because the field was filled with daffodils. Okay, when all at once, see the words at once, matlab immediately, something caught his attention. What was that? A crowd. A crowd, a host of golden daffodils. See the use of the word crowd. Crowd, usually हम ये जो शब्द है, we use it for people, a crowd of people. यहाँ पे Wordsworth is using the word to describe the group of daffodils, as if daffodils वहां पे मौजूद हैं to give him company. एक क्राउड की तरह जमे हुए हैं, दे आर क्राउडेड एट वन प्लेस, द डैफोडिल्स। अ होस्ट, होस्ट कौन होता है? जब आप किसी के घर पे जाते हो ना गेस्ट बन के, तो वो जो रिसीव करता है आपको, he or she is the host. Similarly, Wordsworth is saying that here the daffodils are acting like the host and I am the guest over there. Okay, और लोकेशन क्या है, फील्ड का लोकेशन क्या है? बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज। तो इमेजिन कर लो, एक बड़ा सा फील्ड है एंड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ दैट फील्ड वहां पे एक लेक है, एंड मार्जिन्स पे ना वहां पे पेड़ उगे हुए हैं। सो इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि लोकेशन कैसा होगा, बहुत ही पिक्चर्स होगा। fluttering and dancing in the breeze, and the leaf and the flowers, bell-shaped golden flowers, they were dancing in the breeze. एकदम swinging, sway to and fro, swinging motion था उनका, like as if they were dancing in the breeze. Okay, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of the bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance, continuous as the stars that shine. Now, if you start counting the stars, आजकल तो दिख नहीं रहे हैं because of pollution and all, लेकिन पहले, when you sit and start counting the stars, you are unable to count the stars. Why? क्योंकि millions and millions होते हैं. Similarly, Wordsworth यहाँ पे बोल रहे हैं कि the number of daffodils present, they are uncountable. I am unable to count them. And they are present in a continuous manner. बस जहां देखो वहीं पे है क्या? Daffodils. Field भरा हुआ है daffodils से. And twinkle on the Milky Way. Now जैसे stars है ना,
You see the stars, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. The stars are twinkling. Okay, the stars always twinkle. Similarly, ये जो daffodils है ना, वो भी they were shining under the sun rays. Okay, they were shining when the sun rays was falling on those flowers. They were giving out a brilliant golden shine. They stretched in never ending lines. अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी कभी देखे हो गूगल पे या फिर आपके ज्योग्राफी के किताबों में, आप क्या देख रहे हो कि स्टार्स है, प्लैनेट्स है, गैलेक्सीज एंड सो मेनी प्रिटी थिंग्स, एंड दे सीम टू बी कंटिन्यूअस, नेवर एंडिंग. द स्टार्स आर कंटिन्यूअस इन द गैलेक्सीज. You are unable to count the stars in the sky, and the stars keep on twinkling, and there are so many stars that you are bewildered by their presence. Similarly, Wordsworth is also saying that इतने सारे daffodils हैं कि मैं गिन नहीं पा रहा हूँ, and these daffodils are also shining brilliantly under the sunshine. Okay, along the margin of a bay. Now remember the location जो हम पहले स्टैंजा में पढ़े थे, beneath the trees, beside the lake, beneath the trees, हम पढ़े थे पहले स्टैंजा में. सो अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, यानी कि लेक जो है ना, जहां पे लेक खत्म हो रहा है वहीं से डैफोडिल्स का फील्ड शुरू हो रहा है. 10,000 saw I at a glance. At a glance मतलब instantly I looked at the field and the number which came into my mind was 10,000. ऐसा नहीं कि 10,000 फ्लावर्स है, हो सकता है उससे कम हो सकता है उससे ज्यादा हो, बट 10,000. एंड यू सी 10,000 इज एन एग्जैजरेटेड नंबर. मतलब अगर आप कहोगे कि वो फील्ड में ना 500 या 1000 फ्लावर्स हैं, हम बिलीव कर लेंगे, लेकिन 10,000, इज इट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू काउंट 10,000 फ्लावर्स इन द फील्ड? नहीं, इम्पॉसिबल. और वर्ड्सवर्थ जो है, ही हैज यूज्ड दिस नंबर 10,000 ऑल ऑफ अ सडन, ऐसे रैंडमली यूज किए हैं, बट सिंस इट्स यूज्ड in an exaggerated way, we call this phrase, or we call this figure of speech as hyperbole. Okay, tossing their heads in sprightly dance. Now who are dancing? The daffodils are dancing. Okay, and tossing their heads, यानी कि वो जो बेल शेप्ड फ्लावर्स है, they are swinging, they are enjoying themselves to and fro. उनको नहीं फर्क पड़ता को क्या उनके बारे में, कौन क्या सोचता है उनके बारे में, उनको घंटा फर्क पड़ता है. Why? Because they are enjoying themselves, they are dancing. सर हिलाते हिलाते, पूरा हिलते हिलते वो डांस कर रहे हैं. ओके, इन अ स्प्राइटली डांस, मतलब एकदम जॉयफुल डांस कर रहे हैं वो. ओके, the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. Now remember, daffodils का field जो है, it was at the side of a lake, right? Just where the lake ended, वहां से field शुरू हो रहा था. अब the poet is saying that both the elements of nature, यानी कि the flowers as well as the waves, both of them were moving in a rhythmic manner, to and fro movement. waves का भी to and fro movement हो रहा है, यहाँ पे flowers का भी to and fro movement हो रहा है. लेकिन पोइट के हिसाब से अगर एक कंपटीशन हो ना कि कौन ज्यादा मूवमेंट कर रहा है आउट ऑफ हैप्पीनेस, तो फिर डैफोडिल्स will turn out to be the winner. Okay, and imagine in such a company, in such a beautiful company, when you are surrounded by these beautiful daffodils, when you are surrounded with a field of daffodils, एक host यानी कि if you go back to the first stanza, a host of golden daffodils, when your host is so warm and welcoming, when your host is so happy, तब आपका मूड जैसा भी हो, you immediately transform, immediately you also start to enjoy your whatever the situation may be. You immediately आप ढल जाते हो, अपने होस्ट का जो सिचुएशन है ना, आपका होस्ट का जो इमोशंस है, आप उसी में ढल जाते हो. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. When I was standing, looking at those fields, I kept on looking at those daffodils. I kept on staring at those daffodils. मतलब मुझे ये नहीं पता था उस वक्त कि फ्यूचर में ये जो सीन है, सीन क्या है?
कि मैं यहाँ पे रोड पे खड़ा हूँ एंड आई एम वॉचिंग द डैफोडिल्स, आई एम वॉचिंग द नेचर, आई एम एंजॉइंग द नेचर। मुझे नहीं पता था कि ये जो सीन है वो फ्यूचर में मेरा किस काम में आएगा। मुझे ये नहीं पता था कि ये जो सीन है इट्स लाइक अ वेल्थ। Okay, it's like a wealth, it's very precious to me, and I realized how precious it was in future. I never realized the preciousness in the present, but I realized the importance of that scene, particular scene, in future. For oft For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. So, in the last stanza of this famous poem, he says, who says? Wordsworth says that often, often on my couch. Now, नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ लेट्स से कि अगर वो किसी लंदन शहर में है या फिर ही इज समवेयर इन अ फार्म हाउस फार अवे फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ डैफोडिल्स इन द फ्यूचर। अब हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि पास्ट में उन्होंने एक सीन देख लिया, डैफोडिल्स एंजॉय कर लिया, नेचर एंजॉय कर लिया, एंड नाउ ही हैज कम बैक। एंड इन फ्यूचर ही इज सेइंग दैट व्हेन आई एम लाइंग ऑन माय काउच, मैं जब सोफे पे बैठता हूँ या फिर लेटा रहता हूँ in a vacant or in pensive mood, then in vacant or in pensive mood यानी कि vacant मतलब when he is not troubled by thoughts, when his mind is completely clear, यानी कि कुछ भी thoughts नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, एकदम empty है। और in pensive mood यानी कि when he is troubled by something, they flash upon that inward eye immediately in my imagination, all of a sudden, like a flash card, क्या आ जाता है? The scene, क्या है वो scene? The field of golden daffodils, which is the bliss of solitude, which is a bliss of solitude की अकेलेपन का खुशी। Okay, now there is a subtle difference between um, okay, there is a certain difference between being lonely and being in सॉलिट्यूड। लोनली और सॉलिट्यूड में क्या डिफरेंस है? देखो, अगर आप फर्स्ट स्टैंजा में जाओ ना तो वहां पे पोएट वाज वॉन्डरिंग लोनली एज अ क्लाउड, और लास्ट स्टैंजा में ही इज यूजिंग द वर्ड सॉलिट्यूड, यानी कि डैफोडिल्स का असर देख रहे हो आप? पहले भी वो अकेला था, अब भी वो अकेला है, पास्ट में भी वो अकेला था, फ्यूचर में भी वो अकेला है, लेकिन पास्ट का जो लोनली स्टेट था, ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। ओके, ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन यहाँ का जो सॉलिट्यूड स्टेट है ना, यहाँ पे भी वो अकेला है, बट ही इज full of peace, he is contented. Why? Because he has experienced the bliss, he has experienced that pleasure. What is that pleasure? The pleasure that the field of daffodils have given him. Even how they have given him physically? No, through imagination. Okay, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. When I imagine the field of daffodils, I immediately rejoice. I immediately start feeling very pleasant. इतना अच्छा लगता है मुझे from within that I feel as if I'm dancing. डांस करते हुए आपको मजा आता है? बस वर्ड्सवर्थ ऐसे नहीं कि सोफा से उठ के ही स्टार्टेड टू डांस, नहीं, ही इज सेइंग दैट वो फीलिंग ऑफ जो हैप्पीनेस है इंस्टेंटली मेरे अंदर इट फिल्स अप। व्हाई? बिकॉज आई इंस्टेंटली इमेजिन्ड द फील्ड ऑफ डैफोडिल्स। ओके, चलो, खत्म हुआ तुम्हारा पोएम। Okay. Now there are certain figures of speech that have been used in this poem, like simile, personification, hyperbole. Simile क्या है? The use of like or as in a sentence. Okay. Personification क्या है? When you give living qualities to a non-living object. Okay. Hyperbole, exaggerated. Any kind of exaggeration को हम hyperbole कहते हैं, जैसे कि 10,000 saw I at a glance. Okay. अच्छा. Okay, fine. Thank you. Now, do remember that Wordsworth is a nature poet, which means he romanticizes and celebrates nature. He worships nature. Nature उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है. He literally is a worshipper of Mother Nature. Okay.